Kusa, outro ped go is basically discuss karan trigonometric portion. ठीक अस वो trigonometric portion मज कि कित किन हसा trigonometric ratio in values calculate karan up to what 360 या इसे को 360 खत beyond दी गई ठीक so तक खतर वुश कि procedure and कुछ trigonometric ratio कत coordinates में let it be positive कुछ negative तम पे कर कि बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास तो डिस्कस हालांकि अत मे बेहतर कह ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलास बट फिजिक्स मज ज्यादातर तुम यूज करान कहें तो आज इस सोन टॉपिक सह बेसिकली कत रिलेटेड व्हाट इज बेसिकली फंक्शन फंक्शन गई क्या फंक्शन कत वनो सो आज समझो फंक्शन कत वनान मैथमेटिक्स मज या फिजिक्स मज फंक्शन तमिच डेफिनेशन क्या ठीक तो कत हेको फंक्शन वन कत हेको ना फंक्शन वन कहें तो आज करो कोशिश फंक्शन समझन ठीक है तो अमि खतर गसन मे गोड कह टर्म्स इस्तेमाल सो देयर आर सर्टेन टर्म्स विच आर रिलेटेड टू फंक्शन ठीक यम मे गोड असल पे क्लियर गसन ठीक अक्सर टर्म मैथमेटिक्स मज यूज करान या फिजिक्स मज यूज करान दैट इज क्वांटिटी यम सात क्वांटिटी वुचान अगर मैं क्वांटिटी वन क्वांटिटी क्या गई वन क्वांटिटी क्या गई कह चीज एनीथिंग एनीथिंग which can be measured कह चीज यूस मेजर हेको कर अगर बेसिकली कंप्लीट टर्म वो दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी असली पूर नाव फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स मज फिजिकल क्वांटिटीज डिस्कस करान तो शॉर्टस मज हेको नाव वन क्वांटिटी अगर मैं कह बेसिकली वन क्वांटिटी कत वनो व्हाट इज बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी ठीक सो फिजिकल क्वांटिटी क्या वनान कह चीज मेजर हेको कर तथ नाव वन क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल वर्ल्डस मज अत थोड़ा बहुत डेफिनेशन बेहतर पहमत मॉडिफाई कर बट स्टिल फंक्शन समझन खतर फिलहाल वो क्वांटिटी बेसिक डेफिनेशन क्या या बेसिक आइडिया रटो क्वांटिटी क्वांटिटी कत वनो कह चीज मेजर हेको कर तथ नाव वन क्वांटिटी अमुक मतलब गो क्वांटिटीजन मज तम सात एग्जाम्पल लेखो सिंस लेंथ मेजर कर सो लेंथ हेको वन क्या क्वांटिटी सिंस टाइम मेजर कर सो टाइम इज बेसिकली अ क्वांटिटी सिंस मैस कर मेजर सो वी कैन कंसिडर मैस एज क्वांटिटी टेम्परेचर मेजर कर सो टेम्परेचर तसा गई क्वांटिटी सो क्वांटिटी गो सिंपल टर्मन मज इट्स अ थिंग which can be measured or anything which can be measured that is simply known as quantity that is now वन क्या basically so we call it as quantity अत पे quantity नाव अगर मैं वो कह वन युस क्वांटिटी अत कम टाइप्स हेकन युस क्वांटिटी अगर क्वांटिटी वो क्वांटिटी दोन किस्मन या constant so quantity can be constant या quantity variable ठीक so quantity it has two types that is it can be either constant or यह सच हेकान क्या यह सच हेकान variable यम सात constant कत करान अगर constant quantity वो constant मतलब गो सो quantity यमुक value fixed गो कांस्टेंट क्वांटिटी वैल्यू क्या फिक्स्ड या सु क्वांटिटी युस हसा पनुन वैल्यू करनी चेंज कहें ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस फॉर एग्जांपल अगर ये निमो पाई सो पाइस सिंस पाई इज रैशनल नंबर हेको एग्जैक्ट वैल्यू यमुक लिखित कहें बट अप्रोक्सीमेटली लेखा पाई 3.14 up to 2 decimal places so pi value 3.14 चाहे कह मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज कर whether you will do addition subtraction multiplication division so pi will always have value 3.14 या ब्याक
number use karan e. It's known as Euler's number. It is an irrational number, but its approximate value is 7.82. Weight kya cha? Constant quantity. Ithe kinch integers, so they have fixed value in the sare constant quantity. तम पद अगर इस वेरिएबलन हज कथ करो, वेरिएबल्स क्या वेरिएबल कथ वनो इस सो क्वांटिटी उस पनुन वैल्यू चेंज करान छ ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस. वो वेरिएबल यूज छ सो गे सो क्वांटिटी यूज हसा पनुन वैल्यू कर चेंज ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशंस. सपोज अगर बका इक्वेशन निम लेट इट बी 2 3x plus 7 equals to 5. So agar bhi ye x value wish, so on solving this linear equation you will get some value of x, jaisa mili x ki value kuni cases mein near x value 1, kuni cases mein x value 5, kuni case mein x value 1/2. So you see x, that's basically a quantity. Yish panun value kara change during mathematical operation. So in certain situation it can have value as 1, 5, 2, 3. So imic value should roza change gasan. At quantity is now one variable quantity. At kya pe now? So we call it as variable quantity. ठीक? Yes, tam sha clear gasan. So itu rest fikri. Chalo SSR is sami. In pat im sat is variable his kath karan. Filal kore start. We started with a quantity. Quantity one is zikasam ch constant to be variable. Albata im pat im sat is variable quantity his kath karan ch. साथ इस वेरिएबल क्वांटिटी वुचान छी या वेरिएबल वुचो इ छ आसान दोन किस्म वेरिएबल युस छ या है कि असित इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो वेरिएबल क्वांटिटी युस आ छ आसान ज टाइप्स. इट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल या है कि असित इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो ब्याक छ आसान डिपेंडेंट वेरिएबल. सेकंड इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक गो वेरिएबल छ आसान ज किस्म. एक इस नाव वना इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल गो सु वेरिएबल या सु वेरिएबल क्वांटिटी मतलब दोनों चेंज गसान. सो वेरिएबल मींस एनी क्वांटिटी व्हिच कैन चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ता छना वेरिएबल. वेरिएबल मज छ पॉसिबिलिटी या है कि ऐसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट वेरिएबल गो सु वेरिएबल यूज कहत वैल्यू है नित बट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट्स. सपोज as could other binomial theorem discuss as soon that 1 plus x whole raised power n im sat evaluate koru. ठीक that must one is use as x value it should lie between -1 to +1. ठीक so use as basically x value is so you can have any value of x. x is है क्या अगर इस यात binomial expressions मज वुचो या यात अगर इस algebraic expressions मज वुचो इम साथ evaluate चीज करान अशु गडनत स्पेसिफाई करान x है कहते वैल्यू असित बट बिटवीन -1 to +1. सो कहते क्वांटिटी कहते वेरिएबल क्वांटिटी या सु वेरिएबल यूज असा कहते वैल्यू है क्रिटिक ड्यूरिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन बट up to specified limits. कि लिमिट्स इज करा डिफाइन मतलब अत वेरिएबल्स कत पर कतस ताम हेकक स वैल्यू चेंज करित ता दरमियान इच्छा वैल्यू खुश गसी स हेकक तात वेरिएबल्स दित. ठीक इम साथ फंक्शन परना तात मस वन ब इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या गो ते डिपेंडेंट वेरिएबल क्या गो. इम पर डिपेंडेंट वेरिएबल च तात वेरिएबल्स वनान यूस हसा यमिक वैल्यू करान च डिपेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या वैल्यू assign. ये समझन खतर यम ज टर्म असल पर समझन खतर छ गड फंक्शन बेसिकली वुची. तार फंक्शन डेफिनेशन परो फंक्शन अंडरस्टैंड करने पत तर फिक्र कि बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या गो तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या गो. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन. बिदिम त एक सपोज अगर हसा आइस इफ यू हैव टू वेरिएबल क्वांटिटीज अगर हसा आइस ज वेरिएबल क्वांटिटीज आसन. So if you have two variable quantities, दोन variable quantities and manch possibility आकाश independent be आकाश dependent so तरता इसकिन फिक्र. अगर इस variable quantity निमो, let's assume आक variable quantity श y, ब्याक variable quantity has x. So if you have two variable quantities, इमन दोन variable quantities and दरमियान चीज आक relation करा define. So first thing you should know is that there should be some relation between y and x. वो गॉडनुक चीज यम साथ दोन वेरिएबल क्वांटिटी यम साथ इस ज वेरिएबल क्वांटिटीज निमो दोन वेरिएबल क्वांटिटीज रिलेटेड अख चीज याद थाउन कि इमन दोन वेरिएबल क्वांटिटीज दरमियान अगर का रिलेशन से डिफाइन कर. लेट्स डिफाइन अ रिलेशन बिटवीन
y and x, y tish variable, x tish variable. Bushis iman don variable quantities and darmiyan ak relation karan define. Let's make some relation between y and x. Bise javanan y yush sa barabar 3x. ठीक, so ऐसा सा कोर अख relation define y तो x दरमियान क्या relation कोर define इश वनान y हसा शी बराबर 3 times x, y equals to 3 times x. ठीक, वह अगर मैं ये यात इमसाद भी यात relations को नजर त्रावान चुस अख चीज गो मैं clear अत में चुस बो विचार अख variable quantity चुस सो यमिक value बो पन्ने मर्जी मुताबिक है change करे. So there is one of the variable quantity here which we can alter on our will. युस हसा इस पन्ने मर्जी मुताबिक है को change करे या युस हसा कहते value है कि assign या यात इस कहते value है को assign करे. अगर इमो दो variable quantities हो मज़ x वुचो x युशी it can take any value. It can take any value. You see x usually as a कह value है रट ठीक, but उस के लिमिट्स करान डिफाइन उस यम साथ इस फंक्शन परो फंक्शनस मन चीज गडनथि डोमेन करान डिफाइन. डोमेन मतलब गो उस x इक वैल्यूज करान डिफाइन कत पे कदस ताम हेकक से दित हां कहीं ते हेकक से तत मजबाक पर दित बट लिमिट चीज गडनथि करान डिफाइन. सपोज अगर ब y निम बराबर 3x बिले कीती युस हसा x युश x इक वैल्यूज हसा हेकक से लेट इट बी 1 पे हसा हेकक से सपोज 50 इस्ताम एग्जांपल खतर. सो अगर ब यथ रिलेशंस को नजर त्राव यथ में चुस ब एक्सेस कहीं ते वैल्यू हेका असाइन करित बट up to specified limits like 1 पे हेकक से 50 इस्ताम आप कहीं ते वैल्यू दित. So there is one of the variable quantity which can take any value here. So this is known as yth variable quantity शीश ना वना independent variable. So we call it as independent variable. वो वन तो तुम्हें आख चीज यम साथ ब वनान चुस एक्सेस हेक ब कह ते वैल्यू असाइन करित मगर युथि च एक्सेस वैल्यू असाइन कर y वैल्यू कर ब तथ पर डिपेंड. सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल इस नो यत मज एग्जांपल ज वैल्यू निम ठीक. सो अगर बह यतस बना x इक वैल्यू यतस बना y इक वैल्यू यम बसे जे दवा x हेकस कह ते वैल्यू नित लेट इट बी मैं सा कोर डिफाइन यतस डोमेन 1 to 50 x इक वैल्यू हेकस 1 पे 50 इस तम त्रे बसे जे दवा बस अत्र x वैल्यू 2. So x हेकस 1 to 50 1 पे 50 इस तम कह ते वैल्यू त्रे. सो बसे जे एत वना x त्रा सा x साथ रो में वैल्यू 2 गो x में से चॉइस इथे को मगर x वैल्यू त्रा 2 y वैल्यू गस ऑटोमेटिकली फिक्स. So when you assign x as 2 ठीक इमसाद ऐसा इमसाद इस या रिलेशनस में x वैल्यू करो पुट क्या 2 इस बराबर. So when x equals to 2 y नेर में बराबर का 3 into 2 that is 6 गो y वैल्यू च गसान फिक्स पत कार इमसाद से या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर. सपोज बजे टाइप का ना x सत्रावे वैल्यू कोता 10 गो x पर से चॉइस. सो x अगर वो वैल्यू त्रा 10 सो y वैल्यू बन में 3 into 10 को 30 गो. यू सी y इट्स आल्सो अ वेरिएबल क्वांटिटी मगर यमिक वैल्यू शुड डिपेंड करा कि क्या छु x न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करन. सो y इज हियर डिपेंडेंट वेरिएबल. सो दिस इज हियर डिपेंडेंट वेरिएबल. क्लियर यस ताम शा क्लियर ठीक. वो यस ताम तौर ते फिक्री कि बेसिकली फंक्शन आसान क्या है ठीक. सो यस ताम तौर एस फंक्शन को ने एस एग्जैक्टली उन अंडरस्टैंड की मैं कोर नो फंक्शन बेसिकली यात में डिस्कस की बट यम टर्म आत से रिलेट छ तुम कर में डिस्कस. चलो आज तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल द फिक्री डिपेंडेंट वेरिएबल द फिक्री वो जाइते वाली में का व्हाट इज बेसिकली देन फंक्शन. तेरे वन साथ से मैं फंक्शन छ क्या एक्चुअली वह है यात में function define कर. We saw function का चीज बना. So what is exactly function? We saw function का बना. Now let's see or let's define function completely. वो करो इस function completely define. विशेष चवना function क्या चीज करें define. अगर ऐसा ऐसनी ज variable quantities आसन अक variable quantity नी में y ब्याक variable quantity नी में x उमन दरमियान हसा ऐसी अख रिलेशन आमुद डिफाइन करना. सपोज मैंने क्या करे रिलेशन डिफाइन. सो वी हैव टू वेरिएबल क्वांटिटीज y एंड x उमन दरमियान हसा कोर में अख रिलेशन डिफाइन बिसे से दमा योरे कि y युश हसा शी बराबर 3x. शाबाश. इन पर अगर हसा y फाइनाइट वैल्यू मिलान छ एस अगर x का वैल्यू असाइन करो
function's definition. If we have two variable quantities, agar asni z variable quantities asan, say ak variable quantity is y, beak variable quantity is x. Then pat use hasa ye x is x man is a choice because it's independent variable. Pachis vanan if there are two variable quantities y and x such that y value hasa is depend karan kat pet. What the value of y depends upon the numerical value assigned to x. अगर ऐसा जो वेरिएबल क्वांटिटीज ऐसे निश आसन उमन दरमियान हसा आइस अक रिलेशन उमन दरमियान आइस अक रिलेशन डिफाइन करमुत बे हसा आइस y वैल्यू डिपेंड करान x के न्यूमेरिकल वैल्यू छु से असाइन करान मगर इतु यो छना तेम पत अगर हसा y आइस सिर्फ अक फाइनाइट वैल्यू मिलान इफ there exists only one finite value. अगर ऐसा y सिर्फ अक finite value मिलान छ यम साथ ऐसा इस x की value assign करो तम साथ चीज वना y हसा छ function of x. Shortest मज वन ब अगर z variable quantity आसन से y तो x उमन दरमियान ओस इसका relation define करमुत relation को define y equals to 3x तम पर अगर हसा y ऐसे सिर्फ अक finite value मिलान छ finite value मतलब गो ये infinity गैस नहीं उनकी there should be no there should be not the involvement of infinity there. Infinity मतलब गो that something which cannot be measured, that that's something which is indeterminate. So अगर ऐसा ऐसे y value depends करान कोई biggest variable quantity in this value but here the value of y depends upon x मगर तेम पच ये दिया था अगर हसा y ऐसे सिर्फ अक फाइनाइट वैल्यू मिलान छ अगर हसा x डिफरेंट वैल्यूज रोजान चेंज करा सपोज अगर x दिखा वैल्यू अगर y छ सिर्फ अक फाइनाइट वैल्यू मिलान तम साथ चीज वना y हसा छ फंक्शन ऑफ x या वन बि शॉर्टेस्ट मज अगर बि यत्स लेख सिंपल टर्म बि लेख द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x बेशुस बि इत वना कि y छ सिर्फ अक फाइनाइट वैल्यू मिलान यम साथ हसा इस different values x assign karan ch so bilek tiletas y depends on x the value of y depends on x if there is if we have given a relation agar aise nish ak relation ais such that the value of y depends on x so seleko tel it kin simple term was like it kin y depends on x depends on is physics term maz ya mathematical term maz lekha function so bilektil y depends on x suk matlab go physics as maz y is function of x so this is the symbolic representation of function clear yes tam go clear theek so I store fikri कि y is function of x यु मतलब क्या हो सिंपल टर्मन मज गो अगर वो यम चीज बासान थोड़ा मुश्किल अगर अस निश का रिलेशन अगर अस कह रिलेशन दिख दोन वेरिएबल क्वांटिटीज दरमियान अगर एम पत एक वेरिएबल क्वांटिटी हुन वैल्यू करान डिपेंड बिगिस वेरिएबल क्वांटिटी हिंदिस वैल्यूस पे द वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स अपॉन x डिपेंड्स ऑन अस लेखान फिजिक्स टर्म मज फंक्शन so y depends on x the value of y depends on x it means in physics it or in mathematics it means y is function of x is symbol so agar चलिया कुंची y has to y उशी has x पर depend करान so physics as मन चीज लेखानी कित की y is equal to function of x या y is function of x is symbol this is just a symbol y is function of x इशन के f is multiplied to x it simply represents a symbolic representation of function clear समझ आया वास्ता so function definition simple term मज function is it बना अगर कोई वेरिएबल क्वांटिटी वैल्यू आस डिपेंड करा बिग्स वेरिएबल क्वांटिटी हिंदिस वैल्यूस पे सच दैट y आस अक फाइनाइट वैल्यू मिलान यम साथ आसा इस x डिफरेंट वैल्यूज असाइन करो मतलब अगर इतकी में एक बोल यम साथ x दितुत वैल्यू 2 s मिला y s मिला फाइनाइट वैल्यू मतलब इन्फिनिटी आने की s मिला फाइनाइट वैल्यूज इस मेजर हको कर दोयम अकुई वैल्यू मिला Suppose अगर बह x वैल्यू छ दिवान 10 y s तिश मिला अकुई वैल्यू and that is finite मतलब इस मेजर हको कर तेम बच्चीस वनान इतकिन तेले आसा छी y करान डिपेंड x पे या चीज फिजिक्स टर्म मज लेखाना y is function of x clear यत साम clear so ये तो रेस फिक्र फंक्शन क्या दिला आसान छ ठीक एम पर तेम साथ इस टाइप्स वुचान छ फंक्शन में बकर जल्दी डिस्कस युस इज अ फंक्शन युस छ फंक्शनन हसा छ डिफरेंट टाइप्स
Physics में मगर कह एलिमेंट्री फंक्शन डिस्कस करान कह बेसिक फंक्शन डिस्कस करान अख किस्म फंक्शन अगर इत कन y रिलेट x से बट सह इन y बराबर x रेज पावर n यत में मगर थवन याद x वेरिएबल n यत मज n बेसिकली यत मज कांस्टेंट रियल नंबर को अगर चे y तो x दरमियान रिलेशन y बराबर x रेज पावर n n मगर कांस्टेंट रियल नंबर मतलब रियल नंबर मज रैशनल ती या इरेशनल ती ठीक मगर x यत हीस रिलेशनस में x वेरिएबल n कांस्टेंट बट n इज कांस्टेंट रियल नंबर तम साथ यत फंक्शनस युस इह फंक्शन अत स्पेशल नाव दिवान फिजिक्स मज सो वी कॉल इट एज सो दिस इज नोन एज पावर फंक्शन यत नाव वन पावर फंक्शन मतलब यह अगर बह जनरल अगर फॉर एग्जांपल इत कन y equals to x raised power 5 so im saat compare kara ke n badal 5 so this also power function ya it can y equals to x raised power minus 1 by 2 so in a n badal kya is minus 1 by 2 so these all are power function matlab go use y equals to x raised power n shakli maz ais clear theek koi type this is the first type second type use atmaz lekhan agar y to x darmiyan relation ais but size in the form of trigonometric ratio suppose y is relate x से करें but in the form of trigonometric ratio suppose y is बराबर sin of x या y is बराबर cos of x या y is बराबर tan of x since y value x पे depend करन but through trigonometric ratio तम साथ यमन यत function युस ये function किस्म छ अत नाव वनान trigonometric function so this is known as trigonometric function और trigonometric function गई सो function यत मज हसा y axis से relate आइस through any trigonometric ratio कुन trigonometric ratio से आसे connect ठीक इन पर अगर मैं कह वन बी शाखन टाइप चलो जो टाइप कर डिस्कस ये गई आख ये गई सेकंड थर्ड अगर इत किन आइस y तो x आइस relate इत किन y आइस बराबर let it be a raised power x यत यह फर्क यत में आसान बेस वेरिएबल पावर या एक्सपोनेंट कांस्टेंट अत नाव पावर फंक्शन अगर वो y तो x दरमियान रिलेशन इत y बराबर a रेज पावर x ये उल्ट ये बेस आसान यह कांस्टेंट यह बेसिकली ये पॉजिटिव कांस्टेंट सो a ये पॉजिटिव कांस्टेंट x वेरिएबल तम साथ यथ फंक्शनस नाव वनान एक्सपोनेंशियल फंक्शन वी कॉल इट एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन So three type cash exponential function. Exponential function है ऐसी दिया शक्ल में y equals to a raised power x. यह में सम base constant. You see कि बोल base number से सम constant. इस power से सम variable. So we call it as so exponential the power में फर्क. Power में आसा power function में आसा base variable. Exponential function में आसा base constant. यह आसा power constant. यह आसा power variable. So this is difference between power function and exponential function clear yatsta so it to rest fikre so first type is power function so shasan ya shakli mas at mas hekak sabat n kin value 3 doim the trigonometric function y as relate in the form of trigonometric ratio y is related to x in the form of trigonometric ratio trim cheese y hek is relate in this form ya it kin hek y relate is x set y equals to a raised power x where a is simply your positive constant and this is your basically exponent which is variable that is now exponential function yeah tsurim type है we call that very type as that is now an logarithmic function logarithmic function क्या गए यम साथ ऐसा y to be x as relate but through logarithm में आसान इम relate so बिल्कुल y बराबर log of x square to the base e but अगर बे तुश since यत में base e इस में already discuss कोरमत so log यत में base e आइस तक ना natural log or Nepalian log so y should बराबर log x square to the base e so y is related to x but in the form of log we call it as logarithm a logarithmic function it can ही ऐसी चीज़ y equals to log of x to the base e different so if you see log in a function or logarithmic function का function as यह शक्ल में exponential function का function suppose अगर का function यत में y as relate trigonometric ratio में trigonometric function होता यत में ऐसा
y आसि या शक्ल मंज, we call it as power function. So this is all about function and its types. सुबह करो इंशाल्लाह डिस्कस लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन पत गस एस क्लियर कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट गो क्या, तम खतर मगर यमन पे फोकस करो. गुड लक.